I will leave the whole presentation for you to look at, but I will be skipping some of the slides because you have covered it very well in the discussion. Policy के बारे में तो I didn't go into detail because all of you know, but I am leaving these slides with you. What contributes to premature deaths? ये हेल्थ केयर, ये 10%। तो आपको प्रीमेच्योर डेथ से अगर प्रिवेंट करनी है तो वो जो बाकी 90% है उनसे करनी है। हेल्थ में तो जब वो पहुंच जाएगा, जितने लोग पहुंचने के बहुत निकट तब आपके पास आएगा, आप जो कर सकते हो आप करो, उससे ज्यादा आपके बस में नहीं। तो यू हैव टू लुक एट अदर एरियाज। व्हाट आर दीज? Genetic predisposition. There are many diseases, and what proportion is contributing around 30%. Then you have behavior. चिप्स खाने की बात हुई, शुगरी फूड खाने की बात हुई, और आप जोधपुर में आए हो वो तो करनी पड़ेगी आपको। प्याज की कचौड़ी खानी पड़ेगी, घेवर खाना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें। पूरी तरह मिर्ची वाला तो खाया नहीं आपने अभी तक, वो भी खाना पड़ेगा। नो, वी हैव सम फूड आइटम व्हिच आर फेवरेट। हाउ मच यू ईट? अगर आपको मिर्ची वाला खाना है, यू कैन टेक अ पीस ऑफ। इट डजंट मीन बिहेवियर का मतलब ये नहीं कि नहीं बिल्कुल भूख हड़ताल, मैं तो खाऊंगा ही नहीं, जितनी भी चीजें टेबल पे रखी हैं दे आर नॉट हेल्दी। हाउ मच यू कंज्यूम इन योर, यू हैव स्ट्रीट फूड, खाओगे करे पूरी बर्फी खाने के बजाय उसका एक टुकड़ा लेके उसको मेडिटेट करो उसके ऊपर। विद ईच बाइट एंजॉय व्हाट यू आर फीलिंग। So behavioral aspects are very important. Then social circumstances. In the beginning, one of you talked about social capital. अगर मुझे यहाँ बैठे बैठे कोई हेल्थ प्रॉब्लम होती है, I have 19 participants and 10-20 organizers. They will step in immediately. संजीव कुमार को कुछ प्रॉब्लम हो रही है, we will take. That is social capital. मेरा वॉलेट नहीं देखोगे आप लोग कि देखो संजीव कुमार को वॉलेट निकाल के उसमें कितने पैसे हैं, उसको हम केयर दे सकते हैं, नहीं दे सकते। Similarly, people who move from रूरल एरिया, माइग्रेशन काफी कॉमन है, सब देशों में होता है, हिंदुस्तान में भी होता है। मैंने सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में काम किया था, तजिकिस्तान में अगर एक जॉब के $50 मिलते थे, उसी जॉब के कजाकिस्तान में $150 मिलते थे, उसी जॉब के रशिया में $450 मिलते, उसी जॉब के यूरोपियन कंट्रीज में $5000 मिलते। तो द पैटर्न वाज Kazakhstan is a bordering country. People used to move to Kazakhstan first. कुछ साल वहाँ काम किया, फिर रशिया चले गए, and then their ultimate goal was to reach Europe, where they can live comfortably. What happens when somebody, usually it is the male member, who leaves the family? He is the source of income, कमाता है पैसा, whatever job he does. And he goes away. What does he do before he goes abroad? बाहर जाएगा, उसको थोड़ा पैसा भी तो चाहिए ना जेब में। नौकरी कब मिलेगी पता नहीं, ठहरना होगा, खाना होगा। So he disposes of some resources. जमीन को गिरवी, all of you know Hindi? Okay. I have this habit, क्योंकि 22 साल यूनिसेफ में काम किया तो मुंह में दही जम जाता था, हिंदी बोलने वाला कोई मिलता नहीं है। That's my mother. So he disposes of the resources or borrows money. जिसके पास उससे पैसा बोरो किया है या जमीन गिरवी रखी है, वो किसको पूछेगा? ये तो बाहर गया हुआ है, तो पीछे हैं। But even these people don't suffer, though they have negative financial balance. They don't suffer. Why? There are people to support them. अफ्रीका में एक कल्चर है जो हिंदुस्तान में पर उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। Nobody sleeps hungry. अगर मुझे पता लगता है ना मेरे पड़ोस में मैडम के यहाँ खाना बनाने के लिए कुछ नहीं है, बच्चों को देने के लिए कुछ
नहीं है. I share whatever I have. I'm also more or less same background, but today I have some food in the family. If the same person comes to a big city or to a foreign land, बड़े-बड़े बेचारा मर जाएगा भूख के कारण, कमजोरी के कारण, आएगा नहीं कोई पूछने, इनको जानता ही नहीं उसको. This is what you were referring to as community support and social capital. That is also very important, and we need to understand this in detail. आपने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया. Individual factors which we inherit, age, sex, तो बदल नहीं सकते. अब मैं 69 years का हो गया. At this age, diseases are more common. I am hypertensive for 15 years. मैं वापस तो जा नहीं सकता, लेकिन वापस 40 साल में मेरे को ब्लड प्रेशर नहीं था, ब्लड प्रेशर हो गया. Similarly, male, female, that you cannot change. And I am born in a family where you have higher prevalence of heart disease, high blood pressure, etc., etc. Then you have individual lifestyle. Who will control? क्या खाऊं, कितना खाऊं, एक्सरसाइज करूं या नहीं करूं, that is important. Social and community networks, we have talked about it. Then you have various ministries. You have also, and then you have general socio-economic, culture, environment. Equity, if I can skip this because we have talked about it. Equality or equity normally go interchangeably. But they are not. ये तो equality का है. इस सबको बोल दिया पेड़ में से तोड़ के फल खा लो. और बेचारा उछल के दीवार में ऊपर नहीं लगा सकता तो फल भी उसके हाथ में नहीं आएंगे. वो जरा उछलता रहेगा कोई नहीं रहेगा. तो somebody will also employ all the fruits and eat. So what do we do in equity? We consider circumstances and characteristics of everyone. So women equity की बात करते हैं. So we look at they have special needs, and we have to cater to those needs. For example, when I joined UNICEF, UNICEF is one organization, equity की बात करते रहते हैं. My secretary had a baby. She went on maternity leave. Then she came back. Went to meet my boss. मैं विजिट में गई, मीटिंग में गया हुआ था, वापस आया तो she came to me, sir मैं रिजाइन कर रही. मैं क्यों रिजाइन कर? Sir I had a baby. Who will look after my baby? Why? You are working in an organization which is working for children of the world, and we have a staff member who has a baby and has to resign. I went to my boss, lady, who has 2 children. मैंने कहा मैडम मंजू ने आपको रेजिग्नेशन लेटर दिया. हाँ शी केम इन. मेरे को वापस चाहिए. नो शी रिजाइन ऑन एंड ऑन. मैंने कहा नहीं मेरे को वापस. आई वाज आल्सो हेडिंग स्टाफ एसोसिएशन इन दैट ऑफिस. मैंने मेरे को वापस ले लिया. मैंने और फार्किंग भी 10 दिन में डाल दिया. फिर ये क्या किया तुमने? मैंने कहा आपने मुझसे पूछा क्यों रिजाइन कर रही है. We have workplaces which are dominated by the need of the men, not by women. And they said घर में कोई रखेगा नहीं. I don't feel comfortable. एक है तो सही मेड. मैंने को उस मेड पर बच्चों को दोनों को ऑफिस में लेके आओ. I talked to staff association. हम लोग खाना इकट्ठे खाते थे. मीटिंग में मैंने लंच मीटिंग में मैंने बोला कि बताओ क्या कर सकते हैं. कहते सर बेबी कोट खरीदते हैं, उसको अलग कमरा देते हैं. ऑफिसर को कमरा मिलता था, सेक्रेटरी को नहीं मिलता था. बट वी टुक ए डिसीजन. एक कमरा खाली करवाया, बेबी कोट खरीद के लगाई, स्टाफ एसोसिएशन ने खरीदी. और हमारा भी जब बीच बीच में मन बोर हो जाते थे काम करते जाके बेबी के साथ खेलते. आई वाज देयर फॉर 2 years, बट द डे आई लेफ्ट इट इज दैट. दिस इज इक्विटी, नॉट इक्वालिटी. बच्चे लाना अलाउड नहीं है, वो इक्वालिटी है. Then women will suffer. If you don't take care of them when they are pregnant, women will suffer. Unfortunately or fortunately, men don't deliver baby. You have to take care. That is what is equity. ये नेशनल अब हेल्थ पॉलिसी में आप जा रहे हो. विमेन इन फूड प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चर, सबके बाद जा रहे हो आप हेल्थ के लिए कुछ करो.
जैसे अपनी पॉलिसी तो दिखाओ, तुम्हारी पॉलिसी में ही नहीं लिखा हुआ। हमने 2017 की पॉलिसी में हेल्थ केयर ओरिएंटेशन इन ऑल डेवलपमेंट पॉलिसी, खाली हेल्थ पॉलिसी नहीं, हेल्थ इन ऑल पॉलिसी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, देन यू कैन एड्रेस डिटरमिनेंट्स, कीपिंग एन आई ऑन टाइम। The health of people as its central pillar. Environment policy है, integrated energy policy है, तो ये सब देखनी पड़ी हमें। When we were writing National Health Policy 2017, we looked at all the policies, and unfortunately, none of the health policies in the past determinants were included. So for the first time, we included determinants and how they will be addressed. So we looked at other policies. Climate change and health, very, very important. And I attended one meeting, things have improved now, जिसमें World Environment Day, if I remember correctly, 5th June को होता है। तो the joint secretary who was in charge, minister आया हुआ है, सब बात हुई। मैंने उनसे पूछा कि सर, environment forest ministry को तो बुलाया नहीं, वो अपना अलग कर रहे हैं। This is the coordination health की बात हो रही है, climate change and health पे आप वर्कशॉप कर रहे हो, Ministry of Environment, forest वाले अलग कर रहे हैं, health वाले अलग कर रहे हैं। You don't talk to each other, but subsequently things change and they have a task force on health in Ministry of Environment and Forest, which is looking at health related issues। और बहुत सारे मिशन हैं, solar mission, water mission, Green India Mission, all these have implications for health. So we as leaders in health have to look at the whole spectrum, what is happening in other sectors which has implications for health. और हर उसमें प्रोग्राम आप टोबैको ले लो, एनसीडी ले लो, उसमें मल्टी सेक्टोरल प्लान ऑफ एक्शन। मैंने मंगवा ली मिनिस्ट्री से कि बाकी मिनिस्ट्रीज का रोल क्या है, मेरे को भेजो। मेरे पास इतनी सारी फाइल्स आ गई मिनिस्ट्री से, हर एक ने अपनी अपनी अलग बना रखी है। एंड सम ऑफ देम आई न्यू पर्सनली, मैंने उनसे पूछा एनसीडी वाले डॉक्टर शौकत, उसका बहुत सा फोकल पॉइंट, मैंने कहा आपने तो बहुत अच्छी प्लान बनाई है, बहुत सारी मिनिस्ट्री का रोल है, उनसे बात की। हेल्थ वाले अपना डाल देते हैं कि ये मिनिस्ट्री ये करेगी, उनकी तो बात ही नहीं थी। हाउ कैन यू टेक इट फॉरवर्ड? What is proposed now? Health cell in every ministry. I am not updated on last 2 years if there has been any problem. जो भी उनके plan, project, program, policies बनेंगे, somebody with expertise in health will look at them. उनके implication आपको 10 साल 20 साल बाद पता लगेंगे। आजकल कोई नहीं बात करता, अपने मिनिस्ट्री में बात करते हैं दूसरों से। If you have a health cell which is reporting to that ministry and also to Ministry of Health, because if they don't understand implication for health, they can take expertise from Ministry of Health. Ministry of Health can tap into ICMR or other such institution so that you are aware. ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है। When I looked at social determinants, and I looked at, we were moving from MDGs to SDGs when I was in the UN. So I was involved in looking at it. The best thing about Sustainable Development Goals is there was 5 years consultative process. हर देश में वर्कशॉप हुई कि क्या होना चाहिए। MDGs, a group of experts sitting in the basement of United Nations headquarters, which was across UNICEF headquarters. I used to visit them क्योंकि उनका कैफेटेरिया हमारे कैफेटेरिया से अच्छा था, वहाँ खाना बेहतर था, हिंदुस्तानी खाना भी मिल जाता, तो वहाँ मैं जाता रहता। तो वहाँ बैठ के इकट्ठे होके हमने बना दिए MDG। अब हेल्थ वाले से पूछोगे तो क्या बोलेगा? मोर्टेलिटी कम होनी चाहिए, बीमारियां कम होनी चाहिए। वाटर सैनिटेशन वाले से पूछो, बोलो नहीं पानी मिलना चाहिए सबको। तो MDG स्पेसिफिक टू सर्टेन एरियाज। SDGs में क्या डिफरेंस हुआ? हेल्थ वाला गोल देखें अगर, ensure healthy life and promote well-being for all at all ages. तो संजीव कुमार 69 is included. पहले क्या था? Under 5 children, maternal mortality, बस
संजीव कुमार तो एल्डरली का तो नाम ही नहीं, पूरे एमपीजे में एल्डरली का नाम ही नहीं है कहीं. And they are becoming burden to the health system in our country, and that burden is going to increase over period. So now it is healthy life and promote well-being. It is not diseases. It is healthy life and well-being. तो मैं अगर healthy हूँ तो मैं भी included हूँ. खाली mortality और disease वाला नहीं है. And all the SDG goals, there are 18 of them, and other 17 contribute. All the goals, and you can look at environment goals, you can look at poverty goals. तो गरीब है, सबको मालूम है कि बीमार ज्यादा होगा, बीमार होगा तो इलाज करवाने के लिए पहुंच नहीं पाएगा. क्योंकि फ्री ट्रीटमेंट, घर से अस्पताल पहुंचने के लिए तो खर्चा चाहिए. वो डेली वेजेस लेबर है, अगर वो अस्पताल में चला गया इलाज करने, उस दिन की दिहाड़ी तो गई उसकी, उस दिन तो खाना नहीं बनेगा, चूल्हा नहीं चलेगा. तो मैंने ऑफर्स इन हेल्थ फील्ड की हम फ्री ट्रीटमेंट दे रहे हैं, लोग क्यों नहीं आ रहे? देर आर other opportunity cost, even if you give free treatment. So all those brilliant, and then you have inequality and peace goals. You look around the world, जहाँ जहाँ लड़ाइयाँ हो रही हैं, इंडिया में भी जो पॉकेट्स हैं जहाँ पे अनरेस्ट है, वहाँ नक्सलाइट्स पनपते हैं, वहाँ डेवलपमेंट नहीं होती, उनके हेल्थ इंडिकेटर भी काफी से कम हैं. And the approach to addressing social determinants of health is health in all policies. This is WHO headquarters और health in all policies के global trainers की मीटिंग हुई थी. And the picture is very small, but if you can look it carefully, this is me. So I'm one of the global trainers on health in all policies. And then this is Delhi. This is for South Asia. This is. There is an initiative of World Health Organization to adopt the approach of health in all policies so that you can address health determinants. कैसे implement करना है? I will be rushing through some of these slides. You can look at these. Are not related to only health in all policies. These are in general. How do you engage other ministries in working together? Ministries related to health in all policies. गवर्नमेंट का रोल क्या है? गवर्नमेंट हैज टू अडॉप्ट मोर ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच. सारे मिनिस्टर इकट्ठे मिलकर काम करने हैं. एंड होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच. अब मेडिटेशन आपने बताया था सोसाइटी, तो यू हैव अ होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच एंड दैट इज प्रमोटेड बाय द मिनिस्ट्री. यानी ये तो सोसाइटी का काम है, हम नहीं करेंगे. दैट इज. And then you have to have leadership and stewardship, better governance, formulating and implementing policies, research to address the constraints. And that's where institutions like AIIMS play a very important role. Wider participation in policy making and implementation. Those of you who have been looking at health policy carefully, 1983 की पॉलिसी कैसे लिखी गई थी? People of my age would know, but some of you may not. How it was written, 1983 policy. It was to implement Almara Declaration, Health for All, by 2000. There was a gentleman called Dr. Harcharan Singh, a very renowned teacher in preventive and social medicine in Patiala Medical College. He was the first advisor to Government of India in Planning Commission on Health. He is the one who wrote it. And I was doing MD that time. He came and gave a presentation how the policy. One person. We got better in 2002 health policy. How many people were involved? 4 people were involved. Essentially bureaucrats. And 2017 policy, हम जो स्टूडेंट है पब्लिक हेल्थ, हमने वो जितने लोगों को इन्वॉल्व करना सबको. We had consultation, we put it in public domain, जिसको जो comment देने दो, 5,000 comments came. Each one of the comments, we had a document which was, you click on your comment and we show you policy में कहाँ पे है आपका कमेंट. अगर नहीं किया, क्योंकि कोई लोग तो बोलते हैं प्राइवेट में इन्वेस्ट करो, बोलते हैं पब्लिक में, तो वो दोनों कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, वो भी हमने दिया कि हमने इंक्लूड नहीं किया क्योंकि कॉन्फ्लिक्टिंग सजेशन. सारी मिनिस्ट्री को इन्वॉल्व. We had regional consultation, all state governments were involved.
गए हम जगह जगह, नॉर्थ ईस्ट की हमने गुवाहाटी में की, यूनिसेफ की हेल्प ली, दे हैव ऑफिसर्स देयर, वी इनवाइटेड हेल्थ सेक्रेटरी, एजुकेशन सेक्रेटरी, एनजीओ, and whatever government felt, state government felt is important, that ministry was represented. But when you involve people, what do? जाके पूछो मैडम हेल्थ पॉलिसी लिख रहा हूँ, क्या लिखूं? मैडम will be confused. We had a draft. तो हमने वो ड्राफ्ट शेयर किया, उन्होंने कहा कि नहीं ये ठीक नहीं है, इसमें ये ऐड करो. When you have a draft, then you can ask for their input, which will be specific and solid. You have to include, and very good suggestion came from Ministry of Education, Ministry of Environment. जब public domain में गया, उन लोगों के comment आए, and then also WHO. We had a policy draft which was 60 pages. Meeting ministry में हुई, मंत्री जी चेयर कर रहे थे, WHO representative भी उसमें थी. WHO रिप्रेजेंटेटिव ने बोला सर ये पॉलिसी तो 30 पेज की होनी चाहिए, ये 60 पेज की है, उसमें ये 6 पेज हमारे भी डालो. तो आई रेस्पोंडेड कि 60 पेज की ऑलरेडी है, तो अपने 6 पेज और इसमें डालना चाह रहे हो, विल यू गिव अस फ्रीडम? वी विल इंक्लूड व्हाट यू आर सेइंग बट नॉट ऑल 6 पेजेस, नॉट एवरी वन. देन वी फाइनली रिड्यूस्ड इट टू व्हाट इट इज नाउ. This is the policy. I'm sure all of you have seen it. कितने pages किए? 36 pages. I have a question. Yeah, बोलो. Are there any interministerial programs about such thing in place in India, or is it still a utopian concept? There are many mechanisms. If you can hold that question till I come to that point. There are many mechanisms we have. We don't use those mechanisms. This is how it goes, but ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व करोगे, ज्यादा सजेशन आएंगे, सबको सेटिस्फाई करना पड़ेगा. And I look back with great satisfaction. This is one of the few policies जब ये रिलीज हुई क्रिटिसिज्म नहीं हुआ. हर हेल्थ पॉलिसी में ये नहीं है, वो नहीं है, हमने एनजीओ को इन्वॉल्व किया, एक्टिव हेल्थ एक्टिविस्ट को सबको इन्वॉल्व किया, सबके सजेशन मांगे. That is the advantage of participatory process. मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, पहले तो हमें समझ में आना चाहिए कि बाकियों का रोल है. हम अपने अपने प्रोग्राम करते रहते हैं, बाकियों से बातें नहीं करते. पहले तो हमें समझ में आए कि हेल्थ के डिटरमिनेंट्स आर वे आउटसाइड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ. वी हैव टू वर्क विद दैट. इनकॉर्पोरेट हेल्थ इन वो कर लिया हमने इन हेल्थ पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी, ब्रिंग रिलेटेड मिनिस्ट्रीज अंडर वन अम्ब्रेला. I will go into your question later. You have multi-sectoral action plans for tobacco, wine series, etc. उनको सबको इकट्ठा करना है. There is another initiative called health impact assessment and health lens assessment. You look at every project, plan, program, policy with health in your mind. Implication आज क्या है, 5 साल बाद क्या होंगी, 10 साल बाद क्या होंगी, लॉन्ग टर्म में क्या होंगी. Technical expertise. If you don't have, you bring it. And we have to advocate for health in all. हम ही नहीं करेंगे तो कोई नहीं improve करेगा. Let other sectors take lead. I remember when I started work as project officer immunization in UNICEF, तो बहुत बात होती थी, NGOs को involve करो. We had a gathering of सरपंच. उसमें उनसे पूछा टीकाकरण कार्यक्रम इतना कवरेज है, इतना करना है, आप बताओ क्या कर सकते हो. उन्होंने बताया, हमने लिया फटाफट और उसमें एक बुकलेट बना दी. सरपंच की राजस्थानी पगड़ी पहने हुए सरपंच की फोटो. मेरे गांव में कोई बच्चा टीकाकरण के बिना नहीं बचेगा. और उनने जो कहा था वो बन गया. उसी तरह नेहरू युवा केंद्र, उनकी एक मीटिंग हो रही थी, बहुत 100 वॉलंटियर थे. उनसे पूछा ये प्रॉब्लम है. उन्होंने कहा सर half of our volunteers are motorcycle, two wheeler. आपको वैक्सीन नहीं पहुंचना, हम हेल्प करेंगे. आपकी एएनएम को बोलो, नेहरू युवा केंद्र के जो वॉलंटियर है उनसे कॉन्टेक्ट करें, हम पीएचसी से जाके वैक्सीन कैरियर वैक्सीन लेके आएंगे. आई एम टॉकिंग ऑफ 80s, लेट 80s एंड अर्ली 90s. अब तो सिस्टम काफी सुधर गए हैं. एंड देन वी मोबिलाइज. अनलेस यू टॉक टू देम, आप उनसे बात किए बिना इंटरसेक्टोरल एंगेजमेंट हम पिछले 30-40 साल से हर प्लान के एंड में इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन लिखते हैं, पर उनसे बात नहीं करते किससे कोऑर्डिनेशन. दैट्स वेरी. एंड प्रोएक्टिवली यूज इंटरमिनिस्ट्रियल इंटरसेक्टोरल
platform and mechanism. We will come to what you were saying. This is what I had in mind. You have existing mechanism for mobilizing other ministries and sectors. What are those? Cabinet committees, parliamentary committees, health के ऊपर भी है. Interdepartmental committees and units, you already have. Have you heard of mission steering group in health? Yes, sir. Yes. And that is created for NHM, but that looks at all health issues. उसमें कौन है? चेयर तो obviously मिनिस्टर ऑफ हेल्थ करेंगे, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के मिनिस्टर भी है, अर्बन डेवलपमेंट के मिनिस्टर भी है, उनमें 6 मिनिस्टर्स हैं. They come themselves. I attended a few meetings when I was in NHS. वहाँ रेज करो, वहाँ उनसे पूछो कि आप क्या कर सकते हो. So there are various mechanisms. HRD ministry बनाएंगे, education और related ministry बनाएंगे. You have one mechanism, you bring all the ministries together and make a mega ministry. You have joint budgeting exercise. उनको कितना चाहिए हेल्थ का, कितना चाहिए, कितने resources हैं. Intersectoral policy making. Non-government organization is very important for you to have non-government organization क्योंकि उनकी thinking sectoral confinement में नहीं होती. अगर एक NGO है वो तो बच्चे का भला अगर चाहता है तो वो बात करेगा. वो तो आप बताओ ना कि women and child development करेगी या health करेगी या social welfare ministry करेगी. Very important for you to have them as partners. Facilitators for intersectoral action for health in all policies. Government, अगर government की support नहीं करे आप नहीं. Very important for you to include government. And I remember when I was making a lot of noise with one of the people who is very well connected in political circle. 2014 का जो वो मैनिफेस्टो था बीजेपी का, उसने लिखा था. उसने मेरी बात सुनी बड़े ध्यान से. तो आपका मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को बंद कर दें, बाकियों को कहने से मैंने कहा नहीं, वो मेरा मतलब नहीं. तो you have to be careful what messages you convey. Political priorities require urgent changes. Issues that have public support, strong effective champions in bureaucracy. You have to identify them. Well-planned intersectoral action and clear goals. Legal framework to support policy in all other sectors. Adequate resources, that goes without saying. Plans to monitor and sustain outcome. हम डाल देते हैं और monitor नहीं करते कि कितना action हो रहा है. Barriers, unstable and destructive leadership. I remember many times, नड्डा जी जब हेल्थ मिनिस्टर थे तो हम कोशिश करते थे उनसे मुलाकात. नहीं वो बिजी है, यूपी में इलेक्शन हो रहा है. तो उनकी और प्रायोरिटीज होती हैं. सो यू हैव टू कीप इन माइंड दैट वी हैव अदर प्रायोरिटीज. अपने मिनिस्ट्री का काम भी वो लोग नहीं देख पाते, बट दैट इज द रियल वर्ल्ड. यू कैन नॉट ब्लेम एनीवन. वो भी है, उनकी पावर में ले रहेंगे तो काम क्या करेंगे. फ्रेगमेंटेड गवर्नमेंट फंक्शंस, कॉन्फ्लिक्टिंग पर्सनालिटीज. कुछ मिनिस्ट्री वाले खासतौर पे ब्यूरोक्रेसी में, some of you are from there, अगर हेल्थ सेक्रेटरी मीटिंग बुला रहा है और एजुकेशन सेक्रेटरी उससे 2 बैच सीनियर है तो वो नहीं आएगा. वो एडिशनल सेक्रेटरी को भेजेगा या ज्वाइंट सेक्रेटरी को भेजेगा. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, नॉट सेइंग दिस इज रॉन्ग और राइट, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशन. देखो उनको बोलो कि सर आप बुलाओ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में मीटिंग, हेल्थ में हेल्थ सेक्रेटरी आएगा क्योंकि वो 2 बैच जूनियर है आपसे. आईसीएमआर में भी है. हम लोग Indian problem. This might be. No, it is not Indian problem. हम लोग ब्यूरोक्रेसी से इतने प्रभावित हैं, जो टेक्नोक्रेट है वो भी ब्यूरोक्रेट की तरह बिहेव करने लगे हैं. हाँ बोलो. This issue would be acceptable to bureaucrats, but what we have now is actually coming down to the scientists, which we are not being trained, which we are being expected for. So that has to be addressed first. जब मैं डॉक्टर सोनू गोयल से लीडरशिप की हमारा कॉमन एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, हम ये बात कर रहे थे कि हम लोग जो है ऊपर जाते हैं ना टेक्निकल पीपल, हम भी ब्यूरोक्रेट्स की तरह, और ब्यूरोक्रेट ट्रेन होते हैं ब्यूरोक्रेट की तरह कैसे बिहेव करना है. हम लोग ट्रेन नहीं होते, बट वी वांट टू देखा वो गया था तो उससे सीनियर लोग वो नहीं आया था, मैं भी नहीं जाऊंगा उसकी मीटिंग. वी डोंट अंडरस्टैंड मेरे को जिसको भेजना है रिप्यूट करना है, ही शुड बी केपेबल ऑफ डीलिंग विद इश्यूज व्हिच विल कम अप इन दैट. भेजेंगे नहीं मीटिंग में, नो शो.
क्योंकि मैं सीनियर हूँ, मैं आपकी मीटिंग में क्यों, मैंने दूसरे को नहीं But we need to, yes, these are the weaknesses. What I am trying to say, you need to understand them, then you can deal with them effectively. Sector with conflicting interest. हमने फूड प्रोसेसिंग की बात की ना, बड़े एक्साइटेड थे, बात भी हो गई थी, बहुत सारी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी तैयार हो गई थी। यस मैडम, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, हम आएंगे, हम एग्रो इंडस्ट्री लगाएंगे गाँव-गाँव में, जहाँ पे सारे फ्रूट हम खरीद लेंगे, किसानों को पैसा मिलेगा, किसानों को तो मिलेगा, जनता तो गई, उनको तो हेल्दी फूड प्रोडक्ट्स मिलेंगे नहीं, अनहेल्दी बना दिया। रेस्ट्रिक्टेड पॉलिसी स्पेस, ये भी मैं स्किप करूंगा, बट आई विल दिस विद यू। व्हाट इज ए गुड पॉलिसी? ये आईसीएमआर वाले बैठे हुए हैं, तो उनकी जो नेशनल हेल्थ रिसर्च पॉलिसी बनी 2021 की अवधारणा पर, वो ग्रुप मेंबर हम लोग 6 थे, chaired by Vinod Paul and then big team from ICMR. We were involved in writing the national health research policy. Very good initiative. पब्लिक हेल्थ वाले तो बताएंगे, हमने कहा जब इम्प्लीमेंटेशन रिसर्च नहीं है, आईसीएमआर बिहेवियरल रिसर्च नहीं करता, इम्प्लीमेंटेशन रिसर्च नहीं करता, ऑपरेशनल रिसर्च नहीं करता, वो करनी चाहिए, तभी तो फायदा होगा लोगों को। तो एप्रिशिएटेड अजेड़ा बोले, सेकुंडी बोले, दोज ऑफ यू हु नो पंजाबी, अगर आप बोलोगे तो आप ही करो, मैं बोलो 2 पेज का नोट बना, I made that note and I made a presentation. उस presentation में एक स्लाइड मैंने बनाई थी। टीवी रिसर्च में मोदी जी जनरल असेंबली को एड्रेस करने गए, वो था 2030 तक टीवी एलिमिनेट करना। मोदी जी ने बोल दिया हम तो 2025 में ही कर देंगे। हम 2025 में करेंगे तो कहाँ से करेंगे? तो आईसीएमआर है ग्रुप एक्शन वर्क किया। हम लुकिंग एट रिसर्च नीड ऑफ नेशनल रिसोर्स, और उसके मैंने 4 हिस्से किए। एक तो वैक्सीन, लोगों का प्रोग्राम मल्टीराइड ग्रुप है, they are working on a vaccine TB which is more effective. It is in final stages and I am so very soon you will get a vaccine produced, researched, tested in India. Then you have diagnostics. वो चला आता है टेस्ट करवाने गांव से 50 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर से, तो आप पूछो मुझे तो 3 दिन बाद रिपोर्ट आएगी, and you have no on that. You need some test which can be done on the spot and help tell the patient. So there are many research projects in that area. Therapeutics, इलाज लंबा होता है, लोग बीच में ड्रॉप आउट हो जाते हैं, मल्टीपल रेजिस्टेंट टीबी हो जाती है, या फिर इन्फेक्शन है उससे होता है, या ड्यूरिंग ट्रीटमेंट रेजिस्टेंस डेवलप होती है। And whom do you address? You look at the general public. General public में you have pool of TB cases. उनको आपने पकड़ना है। वो पब्लिक में भी है, प्राइवेट में भी है। हमारी पॉलिसी में पब्लिक देखती है, प्राइवेट देखती है। Lot more patients of TB are treated in private sector than public sector. तो फुटनोट में लिख देते हैं प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करने में। जब ज्यादा मरीज वहां जा रहे हैं तो मेन पार्ट शुड बी प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर वुड बी इन फुटनोट। पर उल्टा हो करते हैं हमको। आई हैव आल्सो बीन पार्ट ऑफ नेशनल हेल्थ पॉलिसी में देखोगे तो आपको 1 पेज मिलेगा प्राइवेट सेक्टर का, बाकी सब पब्लिक सेक्टर की बात है। So that is one constraint we have for ourselves. Then you have to treat them. Then those who get cured, unfortunately, some of them can die. उनको death होगी, untreated or incomplete treatment वाले, inadequate or misdiagnosis, and all of them contribute to death. And then you have programming. Programming in सब area की होंगी. Vaccination and other preventive measures, rapid diagnosis, simpler and shorter. So that is what I will need as a program manager. और अब हेल्थ रिसर्च पॉलिसी में से तो निकलेगी। आप हेल्थ रिसर्च पॉलिसी कुछ और करिए, हेल्थ पॉलिसी कुछ और तो नहीं चलेगा। तो हमने जब नेशनल हेल्थ पॉलिसी बनाई थी उसमें रिसर्च किया, some experts from ICMR who were part of the group which was writing the policy. It's also already included there. और 5 focus areas we had proposed in operation research. Context, universal healthcare की बात है, सबको चिकित्सा मिले, अफोर्डेबल। एविडेंस हमें जनरेट करना है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रमोट करने के लिए। मेक हेल्थ इंस्टीट्यूशन फुली फंक्शनल।
हम लोग जब जाके स्टेट गवर्नमेंट में बात करते हैं, मेडिकल ऑफिसर्स इतनी वैकेंसी, एएनएम इतनी वैकेंसी, सप्लाईज इतनी पहुंची, इतनी नहीं पहुंची, वी हैव प्रपोज्ड इट, यू लुक एट फुली फंक्शनल इंस्टीट्यूशन, जहाँ डॉक्टर भी है, नर्स भी है, लैब टेक्नीशियन भी है, दवाइयां भी अवेलेबल हैं. मूव अवे फ्रॉम piecemeal approach to fully functional institution. Focus area 3, which I also suffer from, I feel strongly should be included, is private sector. The role in achieving the national program goal, उसमें भी research होनी चाहिए. अभी नहीं हो रही बिल्कुल, tell you zero है, अभी कोई research project नहीं है. That needs to be mainstream. Then governance and accountability. If an ANM give injection of measles and the patient dies, what happens today? ANM को टर्मिनेट करो, सबसे पहले ANM को टर्मिनेट करो. ज्यादा मीडिया में शोर मच गया, डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर को टर्मिनेट, और मच गया CMO को टर्मिनेट करो, और मच गया तो स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर को टर्मिनेट करो. Who is responsible for training of the ANM? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में जो फाइनेंस है उसने पैसे नहीं रिलीज किए. पीआईओ कैसे ट्रेनिंग करेगा? We need to have accountability where it is rather than terminating ANM. ANM को टर्मिनेट करते धक्के खा रही है सर, मेरे को इनस्टेट करो, इन्वेस्टिगेशन हो, इतनी मेरी गलती नहीं थी, नोबडी टॉक्स. वो बेचारी सस्पेंडेड ही चल रही है साल, और अगर भगवान ना करे वो रिटायरमेंट पे करेगा तो उसको पेंशन ही नहीं मिलेगी. Similarly, medical officer या जो भी कोई ऑफिसर है, तो we need to look at appropriate accountability, behavioral modification. All of us in this room know it is important to do exercise. How many of us do it? तो behavior modification मेरे से शुरू होगा, क्योंकि मैं सोचूंगा कि मैं क्यों नहीं कर रहा, मैं वो ये करे, सबको बताता हूँ, I am an expert, और खुद तो करता नहीं. If I don't do it, I cannot. वो साधु की कहानी आपने सबने सुनी होगी. साधु आया भिक्षा मांगने के लिए, माँ ने बोला भिक्षा दे दी कि ये बच्चा ना गुड़ बहुत खाता है, मीठा बहुत खाता है, तो लोग बंद कर. वो एक हफ्ते पहले अभी नहीं का बाद में, एक हफ्ते बाद आया, उसने बोला कि बेटा गुड़ खाना था. तो यही बोलना था तो पहले क्यों नहीं बोला? तो पहले तो गुड़ खाता था, मैंने छोड़ा ही था. तब मैंने दैट इन इंडियन कल्चर. हम वेस्टर्न कंट्री, डॉक्टर सिगरेट पी रहा है और पेशेंट को बोला सिगरेट मत पियो, तो पेशेंट बोलता तुम दैट इज माय पर्सनल लाइफ, आई एम गिविंग यू प्रोफेशनल एडवाइस. So we need to understand behavior better than how we look at it. Scale of good practices and innovation. Initiating है भारत सरकार के NHM में नेशनल समिट होती है हर साल, उसमें पूरे हिंदुस्तान से अनफॉर्चुनेटली पब्लिक सेक्टर के इनिशिएटिव प्रेजेंट होते हैं. फिर स्टेट गवर्नमेंट को बोला जाता है इसको आप अपने स्केल अप करो, स्टेट में कितना पैसा चाहिए वो स्टेट पीआईटी में डालो, आप एनएचएम से पैसा लो और काम करो. But we need to include private sector. Thank you. This is